टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, ऑलमोस्ट 200 ग्राम चिकन छोटी छोटी क्यूब फॉर्म में काट लिया। साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। टिक्का बोटी मसाला, 1 टेबलस्पून चिली गार्लिक केचप, थोड़ा सा पानी डाल के 3 से 4 मिनट के लिए इसको गलने के लिए पका देंगे। सबसे पहले मैं ये बंद गोभी डाल लूँगी, ऑलमोस्ट 1 कप बारीक कटी बंद गोभी, 1 कप कद्दूकश की हुई गाजर और थोड़ी सी शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, 2 टेबलस्पून चिली गार्लिक केचप, 1/2 कप मायोनीज, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, थोड़ी सी शुगर इसमें ऐड हो जाएगी। हल्की सी बटरिंग कर लेंगे, सब स्लाइसेस पे लाइट सा बटर लगा लूँगी।